the number of people who think they can make music has increased because of technology. आप चार चीज इंटरनेट से डाउनलोड करो और एक बट उसके अंदर जान डालना, सोल डालना, उसके अंदर लिसनर को बार बार सुनने का मन करे, वो वाली क्वालिटी डालना, वो शायद सीख के गया आजकल। अब इंडिया में हर तरह का गाना एक्सेप्ट हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका गाना एक बड़े स्टार की फिल्म का गाना होना चाहिए तो ही वो पॉपुलर होगा। You know, Jigar is a real aggressor. He doesn't sleep, but the 9 hour song does well because उसके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अब ये वापस दोबारा नहीं कर सकते। काफी लोग कहते हैं कि आपका एक जॉनर होना चाहिए, आपका एक स्टाइल होना चाहिए, तो people will recognize your music. But I think that's exactly what we don't want to do. We don't want to get stuck in our own loop. देखिए, हमने कुछ फिल्मों में रीमिक्स किए हैं जो हमारी फिल्में थी जिसमें जरूरत थी, but that's fine, that's about it. When we got a hit with अपना बना ले, now everyone's asking me to make तुम्हारा बना ले, उसका बना ले, किसी और का बना ले। जैसे मैंने बोला अभी मी कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए फ्यूजन जिसमें गुजराती और पंजाबी का फ्यूजन करके। वेरी सून सर, हमने कुछ किया है, आप सुनेंगे। क्या बात है यार, इसमें कुछ और ही मान रहे वेरी सून, द ब्रेकिंग न्यूज इज द फ्यूजन ऑफ पंजाबी एंड गुजराती। वेरी सून, वेरी सून। वॉइस आजकल, आवर मीडियम, योर मैसेज। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice Ajkal, our medium, your message. Along with In the Sage, I am absolutely pleased to have Sachin, Jigar, the duo from Mumbai with me. Jigar साहब, Sachin जी, welcome to the show. Thank you so much. सफर कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा। जहाँ भी इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज ऐसे मतलब इतना ब्लॉसम कर रही हो, वहाँ कितने भी घंटे सफर करना पड़े, ऐसे जस्ट ओनली फील्स लाइक कमिंग बैक होम। Oh, perfect. No? हम लोग देख रहे हैं the music industry has got a shift in the last decade. तो ऑटो ट्यून आ गया और अनदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गई हैं, तो उसकी वजह से मुझे कभी कभी लगता है जो टैलेंट रियाज पे उनको जोर लगाना चाहिए था, जो उनको फॉर्मल एजुकेशन पे जोर लगाना चाहिए था, वो अभी ऑटो ट्यून और टेक्नोलॉजी में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टैलेंट पहले से क्या पूल छोटा हुआ है? टैलेंट का पूल छोटा नहीं हुआ है फॉर श्योर। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जरूर हुआ है, उस टेक्नोलॉजी को हम यूज करना भी सीख रहे हैं। तो like how we know every technology will come with its own set of advantages and disadvantages. So I've seen people taking advantage of it more than what's required to be done. तो जहाँ टैलेंट की कमी है वो टेक्नोलॉजी कहीं कहीं पूरी जरूर कर रही है, पर जो आदमी सीखा हुआ है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी से वो आदमी अपने म्यूजिक को आगे ले जा रहा है। हालांकि फॉर द अदर्स हु आर यूजिंग इट फॉर जस्ट फुलफिलिंग द नीड, दे आर नॉट एबल टू टेक द म्यूजिक अहेड विद द टेक्नोलॉजी। सो आई बिलीव दैट जितने लोग रियाज करके सीख के आगे आए हैं वो लोग टेक्नोलॉजी से म्यूजिक को काफी आगे बढ़ पाए। हालांकि जो नहीं सीख के आए, कम सीख के आए, वो टेक्नोलॉजी से वेरिएबल हो रहे हैं। So I wouldn't say that the pool of talent has reduced, but I would say that the number of people who think they can make music has increased because of technology. So there is a certain shift in the way music is being made these days. It's become very simple to make music, I must say. आप चार चीज इंटरनेट से डाउनलोड करो और एक बट उसके अंदर जान डालना, सोल डालना, उसके अंदर लिसनर को बार बार सुनने का मन करे, वो वाली क्वालिटी डालना, वो शायद सीख के गया आजकल। I think the wealth of experience जो आप लोगों के पास है, मैं तो नॉर्मली ये कहता हूँ कि इस तरह के डुओ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। वर्सेटिलिटी लेके आना विद द रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, पार्टी सॉन्ग्स एंड व्हाट नॉट। तो उसके लिए ये जो इंस्पिरेशन आप लोगों में आती है, कौन सी? सर एक्चुअली मैं और जिगर जब मिले भी तो हम वर्कलोड शेयर करने के कारण मिले। Right. Our partnership hasn't come from a place where we knew that we were going to become partners. It was always work first. So Amit Trivedi in fact introduced me to Jigar. जी. And Amit and Jigar were assisting Rajesh Roshan ji. Okay. So when Amit introduced me to Jigar, we became partners. Then Jigar naturally
drew me into Rajesh Roshan's camp. Now Raju Bhai, as we lovingly call him, उन्होंने हमें एक साधारण धुन और एक नमकीन धुन का फर्क समझाया कि कैसे कोई भी एक सिचुएशन पर जब एक गाना आप सोचते हो, सी म्यूजिक इज लाइक ए लैंग्वेज, जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन आप लिखते हो, जैसे एक ऐसे लिखते हो, उसी तरह की बात है। आप एक सिचुएशन को सुनते हो, आपके अंदर से कुछ चीज आती है। बट सिर्फ लव सॉन्ग बनाना है, या अगर प्रोड्यूसर को फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक नमकीन तड़ाकेदार गाना चाहिए तो वो भी बनाना है, वो भी उसको उतनी ही शिद्दत से निभा के करना है, वो तो बल्कि हम राजू भाई के टाइम से ही सीखते चले आए। और यू नो, क्रेडिट टू आवर अपब्रिंगिंग, वी हैव लर्नड टू बी स्टूडेंट्स ऑल आवर लाइव्स। when we moved on to our natural logical step of assisting Preetham sir, we learned a lot. We learned, so we kept learning, you know, as I say. And then there was a time that we have learned under, I mean, we have worked as music arrangers under so many music composers. We've seen their success, their failure. And that's why we, you know, as me and Jigar, we've realized that two things we don't want. We don't want for a listener to be able to hear a song and say that this is a Sachin Jigar song. We do not want to get tied down in a certain style or a certain way, or in the limitation of our own success. You know, Jigar is a real aggressor. He doesn't sleep, but the 9-hour song does well because उसके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अब ये वापस दोबारा नहीं कर सकते. So he's now started to explore newer options to say the same story, same I love you. We have to say same, you know, let's say a dancing or a club situation. I think the ability to be able to deliver across the board for a certain story, for a certain character's narrative through a film, we are those people. We are not the guys who woke up one day, took the guitar and say, oh, it's a lovely morning, let's make a song. We are those guys who hit office and finish whatever job is at hand. कहते हैं eat music, sleep music, dream music. बिल्कुल बिल्कुल. और ऊपर से क्या होता है, वो एक और एक दो नहीं है कि एक और एक 11 होने से एनहांसमेंट हो गई है जो प्रोडक्शन बन के आ रही है. अगर मैं बात करता हूँ छेदो दिवस या सॉन्ग्स लाइक वलन आवोना, इट हैज पिक्ड अप इन द बॉलीवुड एज वेल. Yes. जो ये बॉलीवुड के अटेंशन की बात कर रहे हैं, ये मोमेंटम, डू यू थिंक इट वुड बी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड? See, with Wala Maone is a Gujarati song that we did for a Gujju film, and it got really popular. Or I think that is also achievement in its own, you know, right, that अब इंडिया में हर तरह का गाना एक्सेप्ट हो रहा है. ज़रूरी नहीं है कि आपका गाना एक बड़े स्टार की फिल्म का गाना होना चाहिए तो ही वो पॉपुलर होगा. मुझे लगता है अब एक गाना independently, without the video itself, without the barrier of a language, is getting popular. That only tells us that we have a great audience. We have a great audience. We have a great NRI audience, and I don't think we have enough music to reach all of them. So अगर आपको थोड़ा सा भी म्यूजिक बनाना आता है, this is the time, because the world is now your playground. Absolutely, I think it's a global family at the moment. तो दुनिया बड़ी छोटी होके रह गई है. Exactly. Right? So, like me coming from Chandigarh to Australia around 29-30 years ago, उस जमाने में और आज के जमाने में बोलता हूँ मैं ओल्ड स्कूलर. But जब हम आप लोगों को अभी देखते हैं, the kind of music that you come up with, and I fully agree with Sachin bhai. पहले गाने में और दूसरे गाने में कोई भी सिमिलरिटी नहीं मिल पाती है. हम लोग जी देखिए क्या है, वो काफी लोग कहते हैं कि आपका एक जॉनर होना चाहिए, आपका एक स्टाइल होना चाहिए, तो people will recognize your music. But I think that's exactly what we don't want to do. We don't want to get stuck in our own loop, because then we are limiting ourselves. And if you're doing music, it is a source of unlimited inspiration. So why to limit yourself? We know we are on a longer journey. शायद 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, when you hear all Sachin Jigar songs, you will find that one thing which is similar, which we don't know right now ourselves. So I think it is a longer journey that we are set out on. So we don't want to limit ourselves. आज के जमाने में मैं देख रहा हूँ पहले जैसे जोड़ियां हुआ करती थी, आज के जमाने में सिंगल आर्टिस्ट ज्यादा आ रहे हैं. मैं क्या सचिन जिगर की बात करूं, सलीम सुलेमान की बात करूं, देयर आर नॉट मेनी ऑफ दैट. व्हाट कुड बी द रीजन? क्या आजकल पेशेंस लेवल कम हो गया है कि क्रेडिट लेने का चस्का बंदे को ज्यादा पड़ गया है?
nahi, sir, every partnership calls for adjustment. Absolutely. When two people come together, be it for work, be it generally in life, it calls for, see, 24/7, 365 are different people, and 24 years of our life also we were completely different people. What music Jigar listens to post work, what I listen to post work was very different. And has that sort of crossover happened? It has happened. Now he's listening to Kishori Amonkar and I'm listening to John Mayer. So your orientation is different. You're coming from a very different, backdrop. But I tell you what, I think uh, in general we are becoming people, and I'm not really happy about saying what I'm going to say. That as people we are not wanting to commit. Commitment is a very big part of our partnership today. I feel like he's my family, or he thinks like that of my daughter, or I think like that of his son. Somewhere, which is why you see a lot of solo artists. Which is why you see a lot of solo in general. And solo, I cannot tell you that how Jigar, sometimes fills up for my absence in case if I was well, in case I had to attend to my family, and I would love to do the same for him. So there are advantages, but of course, as a race, if we are not wanting to commit, not wanting to adjust, I think that is where this is. I think commitment is the key word. Commitment. And on this point, actually, we must all appeal and say, listen, we need bands. We need people to come together. We need more music Cohesive music. that is come to, because the power of more people is definitely the key here. There were so many bands earlier. अब मुझे बैंड कल्चर ही कम होता दिख रहा है. बिल्कुल. तो if I can add to what Jigar is saying, you don't really have to be a duo. You can collaborate. Bilkul. Yeah, you can collaborate for a certain. We see that all the time in the West. We see Ed Sheeran doing a concert with Chris Brown. It's wonderful to see that. So I think these energies coming together, it's magical. No matter where you are, no matter it's corporate, it is music, art, entertainment, or in generally in life. Just meeting you, sir, like such a vibrant person, so sharp, so active. These energies is something we totally take from. And जैसे मैंने बोला अभी me coming from चंडीगढ़, I would be looking forward for a fusion जिसमें गुजराती और पंजाबी का फ्यूजन करके. वेरी सोन सर, हमने कुछ किया है, आप सुनेंगे. क्या बात है यार, इतना कुछ और ही मान लिया. Very soon. The breaking news is the fusion of Punjabi and Gujarati. Very soon. Very soon. Funny moments Uh-huh. from the Bollywood experience that you have had over 2 decades. What would that be? Oh my God. With all due respect, हमने काफी funny moments experience किए हैं. देखिए बॉलीवुड ना, ऑनेस्टली भेड़ चाल है. कोई एक चीज चली तो ये सारे उसके पीछे चलेंगे. तो जब हमारा 4 बजे लेकिन पार्टी सुबह की हिट हो गया तो there were so many people who called us and said, listen, 8 बजा दो, 12 बजा दो. And from day one we had thought कि हम कभी repeat नहीं करेंगे. So फिर जब हम when we made Saibo, जब वो गाना पॉपुलर हो गया तो सारे कह रहे अब एक गुजराती वर्ड वाला एक गाना दे दो. So I think that is a loop, किसी और बीच में remix चलने लगे थे. We are not good at doing remix. We are actually extremely bad at that. But people used to come to us and used to say, listen, we can't do it. It's not our job. Let's do originals. Let's do stuff, right? जब original कर सकते हैं तो क्यों नहीं? And then there was a time for a couple of years when people stopped believing in us कि अच्छा चलो अब तो remix का ज़माना देखा. But we didn't fall for it. देखिए हमने कुछ फिल्मों में remix किए हैं जो हमारी फिल्में थी जिसमें ज़रूरत थी. But that's fine. That's about it. When we got a hit with अपना बना दे. Now everyone's asking me to make तुम्हारा बना ले, उसका बना ले, किसी और का बना ले. So Bollywood sometimes can be really funny, but it's the platform and it's the medium that's given us everything we have. Yeah, so people will reach. So we cannot be any less thankful to Bollywood, but it can be That's fun what it is. sometimes. That's what it is. Pinch me moment. कभी लगा यार ऐसा हो गया क्या? सर मैं शायद अभी भी बोलते वक्त शायद इमोशनल हो जाऊं तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ.
सर मैं बिफोर मीटिंग जिगर ऑल्सो मैं थिएटर और टेलीविजन कर रहा था, तो मैं हर रोज जाऊँ स्टूडियो अपना टेलीविजन का डेली सोप्स के बैकग्राउंड स्कोर करने के लिए। अच्छा। और समहाउ अगर आप 4 डेली सोप कर रहे हो तो आपकी लाइफ में इतनी सारी सास बहू ड्रामा होती है कि टू बीट दैट आई यूज्ड टू लिसन टू अ सर्टेन सॉन्ग कंपोज्ड बाय एमएम क्रीम सर। ओके। आवारापन बंजारापन ओ, अगर कहीं से भी आप मुझे काट लोगे ना तो वो गाना मेरे खून से निकल जाएगा। You know, ahead in life when we finished composing for Badlapur and Badlapur's album had become a popular thing, M.M. Kareem sir called me out of the blue. अच्छा। And then he called me and he told me, Sachin, I have no business calling you, but I couldn't stop myself from calling you. I heard the background score, I heard the songs, and I've come to the point of finding your number and calling you just to encourage you and tell you that please keep up at this. Abhi bhi, I don't know if I can really explain in words when I had to call my wife. I can feel that. But I was just grateful, and I told him that I don't know why I couldn't gather the vision or the courage to call you and tell you how much I love you, sir. And that's the thing about great people. They don't carry any baggage. He just called to appreciate, and I just hope that I can do this in return. Like, even if it's just appreciating my mom and calling her कि आज थेपला अच्छा बना है. You know, if you guys would do one thing differently, जो अभी आप कर रहे हैं, what would that be? Make music differently. I think that's the only thing we want to keep doing. We want to really make music in a very different way every time we sit on it. You know, and I hope that every day we wake up, God gives us the knowledge, the power, and the inspiration to do that. So, because I don't think that any talent can match up to unless you are gifted. So, I think we need that gift every day. Talent sometimes can be acquired, it can't be. So, every day morning or when I get up और रात को जब सोता हूँ मैं एक ही चीज सोचते हुए सोता हूँ कि कल सुबह मेरी गिफ्ट मेरे पास है. So I just hope that we can continue make music and make it different. So if you're not making music, you would be making music. Yes. Differently. That's true. That's true. Right? क्योंकि अभी इंस्पिरेशन की बात करी आपने, you are inspirations of hundreds of thousands of people, right? आपने अभी एमएम करीम साहब का नाम लिया. अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आपकी इंस्पिरेशन कौन? So for the longest time, not just me, but everybody from the 80s when I was born was taken by storm when Roja released in 93. A whole generation, me, like so Amit Trivedi and so many other artists I can mention right now. Rahman sir has touched our lives. मेरा उनके साथ एकलव्य जैसा है. उनकी एल्बम रिलीज होती थी, मैं कॉलेज में था. हम 4 दोस्त लोग मिलके एक सीडी अफोर्ड कर पाते थे. मंडे मेरे पास रहती, ट्यूसडे किसी और. मंडे में अपनी सीडी में से अपनी टेप पर उतार लेता था, एंड वी यूज्ड टू लर्न फ्रॉम इट लाइक भगवत गीता. तो ही हैज इंस्पायर्ड नॉट जस्ट बाय हिज म्यूजिक बट ऑफ वर्क. उनका जो आचरण है, ही इज truly deserves to be the living legend he is, because he has inspired us in terms of knowledge of copyright. He has inspired us in terms of technology. He is the one who really brought computers to every musician's house. So he is a very lasting, he's going to be a very, very lasting impression in my life. And I still clearly remember the moment when I finally met him and shook my hands with him. He was so humble, so light on his shoulders. It's simply just amazing person and amazing talent. मेरा थोड़ा सा अलग है. My inspirations keep changing. Of course, Rahman sir, Pritam sir, Rajesh Roshan, John Mayer, for a very long time, these are my go-to inspirations. मतलब कभी, when you are down and low and you want to listen to some music, you go back to certain songs you like of these great people, and then you Ilayaraja sir, some great music. लेकिन मुझे शायद हर रोज कोई अलग चीज इंस्पायर करती है. कोई अलग
म्यूजिक करने वाला बंदा इंस्पायर करता है. सम मे बी सम रॉ टैलेंट फ्रॉम small town would inspire me. Sometimes a cooking show would inspire me. So my inspirations really are different every day, and I'm grateful that little things can inspire me. Absolutely. Yeah. आपने अभी ए आर रहमान साहब की बात करी, मुझे उनसे मुलाकात करने का मौका मिला. आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे. बहुत कम बोलते हैं, हाँ. और जो बोलते हैं बाकमाल बोलते हैं. इंडियन म्यूजिक इज डाइवर्स एंड रिच, अपने आप में ही बहुत बड़ा है. अपने कॉम्पोजिशंस में जब हम डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को शामिल करने की बात करते हैं, हाउ डू यू पिक दैट? think as far as गुजराती कल्चर इज कंसर्न सर, बच्चा 6 साल का होता है, वो घर में आके जैसे आपके टिप्पे होते हैं वैसे ही हमारे शादियों के कुछ गाने होते हैं. जी. तो वो आप कब पिक कर जाते हो आपको पता नहीं होता. जैसे जब मेरी डॉटर ने फोक स्टूडियो के लिए हमने लाड़की गाया, जब मेरी डॉटर ने लाड़की गाया, सर इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग कि वो गाना जो है अपना रेगुलर 1 2 3 4 4 4 में नहीं, वो 7 8 में रूपक ताल में है गाना. एंड आई वाज क्वाइट वरीड कि क्या ये रूपक को समझ पाएगी, बट वो बहुत नेचुरली उसने गाया. आई थिंक फोक, be it Bengali, be it Assamese, be it Punjabi folk, such a big influence in Bollywood as well. This is not a stretch. That influence is, it's a matter of ownership. If you love who you are, if you can own up, if you have pride. जब मैं स्पेन गया था सर, वो अंग्रेजी में नहीं बात कर रहे थे. हाँ. वो आपको बड़े प्यार से सी बोल रहे थे, यस नहीं बोल रहे थे. आई थिंक इट्स अबाउट प्राइड. आई थिंक as somebody who loves this country, as somebody who loves the culture, we would like to see the youngsters taking more pride in who they are. No matter if we are typecasted for 18th plus, there are a lot of wonderful things about our culture that we want to bring to fore, which is why our whole Gujarati stint is a very passionate drive to be composing for Gujarati films. I promise you, we have worked double time to finish Gujarati films. After finishing Bollywood in the day, you would stay up in the night to do a Gujarati film. So I think one has to take ownership, and then I think taking inspiration from folk is almost like taking inspiration from the food you eat every day. जब फोक की बात करी तो 2 लाइनें हो ही जाएंगी किसी फोक की. Sure, sure. ओरे ओ पारे विराट काले ओड़ी जाजरे मारी हाथों रे जान आजरा मारी लाड़की तन खम्मा घड़ी, मारी दीकरी तन खम्मा घड़ी, मारी लाड़की रे टूड़ी फरी छाली दे मानो. दिल तो मेरा करता है आपको जाने नहीं दूं, but I know there is a meet and greet, there will be a number of people waiting for you. But before we wrap up, what would be your advice to all the aspiring and upcoming musicians who are settled in Australia and still love their Indian heritage? If you love music, I don't think you need to listen to this. But if you don't think you've discovered yourself and you think there is music in you, please, the world is waiting to listen to you. Pick up your instrument, take your mobile phone, record. We are all ears, and especially me and Sachin are waiting to discover new talent. The world is waiting to discover you. Do not be shy. जो आपका best है, वो आप, you just need to put that out, because one fan a day is what you need. So, and I don't think that's very far. Go for it right away. No, absolutely. Just absolutely second what Jigar said, that world is your playground. Like you said, दुनिया छोटी होती चली जा रही है. Smartphone is your stage. The world is your stage, literally. So don't be shy. We found Shirley on internet. She comes from New Zealand, and she's a wonderful girl. She's doing just fine in Bollywood. But if you can hold your own, if you are holding Indian values, Indian culture,
staying here so far away from your motherland, then you are an inspiration that I take inspiration from. So, advice itni hai ki just please follow your heart. Don't be shy. Don't be afraid. And yes, every talent is just another diamond waiting for the world to find its shine. बिल्कुल, एंड डोंट स्टॉप लर्निंग। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जैमिन पटेल भाई का, जिनकी वजह से आज आप जैसे दिग्गज के साथ बैठने का मुझे मौका मिला। सिडनी में शो होने जा रहा है 29th of June at Hillsong Convention Center. Tickets are available on drytickets.com.au. 7 p.m. sharp. Sachin Jigar would be there to entertain you till the moment you feel you are tired, but they would still be there for you. Salute. How excited are you about the shows Oh, in Australia before we wrap? We are very excited. Trust us, we are very, very excited. More so because this is the first time we are performing a ticketed gig in Australia. And I know that we have something special for you guys. And I know you guys are special for us. So, milte hain. Yeah, absolutely, thoroughly excited. Can't wait to feel India away from India. So yes, come one and all, let's make merry. Hello. Once again, drytickets.com.au, 29th of June, 7 p.m., Hillsong Convention Center, brought to you by Cat Entertainment. On behalf of my whole team of Voice Article, Fiji Times, and Indus Age, just wanted to say you, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Fiji Times. Be with the times.